Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I welcome you in my class, that is in English for grade 5. We are learning unit number 7, over the counter medicines. Yes, my dear teachers, there is lesson plan and I have divided this lesson according to this lesson plan. Our first lecture, lecture 1, under the title of grammar, we will learn about definite and indefinite articles, and we will cover a page number 65. Lecture 2, under the title of grammar, pronouns, we will cover a page number 66. It's my dear teachers, and lecture 2 part B under the title of grammar, transitional devices and joining words, and we will cover up page number 66, transitional devices and joining words. Lecture 3 under the title of pronunciation skills, we will learn about consonant cluster, and we will cover up page number 64, question number 4. And lecture number 4, reading and comprehension, page number 62, we will cover up in this lecture. And lecture 5, reading and comprehension, page number 62, half lecture, we will cover up in this lecture. Yes, my dear teachers, this is lecture number 6, listening and speaking. We will learn about how we can take leave taking in page number 66 and question number 8. Lecture number 7, under the title of reading and writing, we will learn about tables and charts, how we can get table and charts. Lecture number 8A, under the title of writing skills, we will cover up page number 68. Yes, my dear teachers and my dear students, in lecture 8B, under the title of writing skills, we will cover up page number 68 and we will learn about time. And this is our last lecture, lecture 9, under the title of writing skills, we will learn about paragraph writing, and we will cover up page number 69. Yes, my dear teachers and my dear students, so today we are going to start our lecture number 0. Yes, Allah subhanahu wa ta'ala mentions in Quran, verse number 1 to 5, read in the name of the Lord who created man out of a clot of blood. Read, and the Lord is most bountiful, he who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. Yes, my dear teachers and my dear students, these beautiful verses are telling us about the power of knowledge and power of pen. These are the first revelation on our holy prophet, peace be upon him, in the cave of Ghar-e Hira. And that is clearly telling that how much importance of reading and writing, even in Islam also. So Allah Almighty may bless us strength to get knowledge properly. So we are going to start our lecture, unit number 7, over the counter medicine. So theme of this lesson is health and drug education, and sub-theme of this lesson is awareness about medicine. So in this chapter we will get about medicine and health and drug introduction. So we are going to start our lecture. Open book, page number 62. Medicines are chemicals or compounds used to cure or prevent disease. They ease symptoms or help in the diagnosis of illnesses. Yes, my dear students, so what are medicines? Medicines क्या है? Medicines chemicals या compound हैं जो हमारी बीमारियों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. They ease symptoms, ये अलामात को जाहिर करती हैं, और help in the diagnosis of illnesses, या बीमारियों की तशखीस करने में मदद करती हैं. Do you have a headache, a cough, or a what?
क्या आपको सरदर्द, हेडिक, सरदर्द, कफ, खांसी, वाट स्किन इन्फेक्शन को कहते हैं जब हमारे जिस्म पे कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन हो या दाने निकल आए तो उसको वाट कहते हैं। देयर इज प्रोबेबली एन OTC टू हेल्प यू, तो गालिबन यहाँ OTC है जो हमारी मदद करती है। एन ओवर द काउंटर मेडिसिन इज समटाइम्स कॉल्ड अ नॉन प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन। ओवर द काउंटर मेडिसिन का मतलब क्या है बेटा कि नॉन प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कि जिसके लिए हमें डॉक्टर से नोट लेने की जरूरत नहीं होती, हमें नुस्खे की जरूरत नहीं होती, हम खुद ही किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके उसे परचेज कर सकते हैं। This is because you do not have to have a note from your doctor to get it. You can buy it at a drugstore or a chain store. Yes, my dear students, so already अब मैंने आपको भी बताया है कि ये वो मेडिसिन होती हैं जिसमें हमें डॉक्टर के नुस्खे की हरगिज जरूरत नहीं होती, हम खुद ही जाके अपनी सिचुएशन बता के किसी भी ड्रग स्टोर या मेडिकल स्टोर से इसकी मेडिसिन ले सकते हैं। There are many kinds of over-the-counter drugs. You see ads for them on TV all the time. There are medicines that help you sleep and ones that will help you stay awake. Yes, my dear students, there are many kinds of over-the-counter drugs. Over-the-counter drugs पे बेटा बहुत सी मेडिसिन हैं जो इसकी एड्स भी हम टीवी में देखते हैं। यू कैन सी एड्स फ्रॉम टीवी ऑन ऑल द टाइम। देयर आर मेडिसिन्स दैट हेल्प यू स्लीप्स, और कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं बेटा जो हमारे सोने में मदद करती हैं। एंड वंस दैट हेल्प यू स्टे अवेक, और कुछ ऐसी हैं जो हमें बेदार रखती हैं, जागाए रखती हैं। देयर आर पेन रिलीवर्स एंड कोल्ड रेमेडीज, और कुछ ऐसी भी हैं जो हमारे दर्द, हमारी तकलीफ को दूर करती हैं। There are non-prescription medicines for almost every part of your body, और गालिबन नॉन प्रेस्क्रिप्शन बगैर किसी नुस्खे के दवाइयाँ तकरीबन हमारे जिस्म के हर हिस्से के लिए मुहैया की हुई हैं, प्रोवाइड की हुई हैं, जो हम अपनी किसी भी दर्द या तकलीफ की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। Some are swallowed and some are put on your skin. बेटा कुछ ऐसी हैं लाइक टैबलेट्स हम खाते हैं, तो कुछ ऐसी हैं जो हमने स्वेलो करनी होती है, निगलनी होती हैं पानी के साथ। एंड सम आर पुट ऑन योर स्किन, और कुछ ऐसी होती हैं जो हमें अपनी स्किन पे लगानी होती है। और स्किन पे लगाने वाली वो होती हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट, जब कभी हमें स्किन एलर्जी हो, कोई हो, तो हमें वो स्किन के लगाने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं। Probably the most common non-prescription drugs are pain relievers. गालिबन सबसे ज्यादा चलने वाली जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, वो दर्द दूर करने वाली है। They will help you if you have a headache, sore muscles or aching joints. These drugs can also help reduce a fever. So they will help you if अगर आपको सर दर्द है, सॉर मसल्स या मसल्स प्रॉब्लम है, या एक्टिंग जॉइंट्स, या हमारे जोड़ों में दर्द है, तो बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो हमारी मदद करती हैं। These drugs can also help reduce a fever. ये जो है ना बुखार को कम करने में भी हमारी मदद करती हैं। Cold remedies are also popular. There are drugs to help a stuffy nose. There are some that make your nose stop running. Yes, बेटा कोल्ड रेमेडीज भी हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और जब कभी ऐसा हो कि हमारा बंद नाक, स्टफी नोज बंद हो, सांस लेने में जब हमें दुश्वारी हो, तो वो भी मेडिसिन है कि हमारा नाक सेट हो जाए और सांस लेना सेटल हो। एंड देयर आर सम दैट मेक आवर नोज स्टॉप रनिंग, और कुछ ऐसी हैं जब हम नज़ला जुकाम फेस कर रहे होते हैं तो उसे भी हमारे रोकने में मदद करती हैं। Some will help you stop coughing. कुछ ऐसी हैं जो हमारी खांसनी रोकने में मदद करती हैं। Others will help to lose the muscles in your chest. Sometimes several medicines are combined into one pill or liquid. They help when you have several symptoms. और कुछ ऐसी हैं, बहुत सी दवाइयाँ कंबाइन हो के भी बेटा क्या करती हैं, एक पिल या लिक्विड की सूरत में बनती हैं जो हमारी तकलीफ को, दर्द को दूर करने में काम आती हैं। They help when you have several symptoms. जब बहुत सारी अलामात एक साथ हमारे जिस्म में नमूदार हो, मीन्स हम सर दर्द भी महसूस कर रहे हैं, नज़ला जुकाम भी हो गया है, खांसी भी फील हो रही है, तो उसमें ये सारी रेमेडीज फिर एक ही पिल या एक ही गोली में आ जाती हैं, जिसे हम लेके इन सारी बीमारियों पर काबू पा सकते हैं।
Over the counter medicines can still carry our risks even though they do not require a prescription. Yes बेटा, यहाँ ये बताया जा रहा है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन के काउंटर पर जो अद्वियात हैं वो क्या है, उनके लिए खाने के लिए हमें रिस्क भी है, उनका कुछ नुकसानात भी हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। इवन ऐसा है कि इनके लिए नुस्खे की जरूरत नहीं पड़ती है। There is the possibility of side effects or harm ड्यू टू एक्सेसिव डोज। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद ही, क्योंकि हमें किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन नहीं दी होती, तो हम खुद ही कभी इतनी ज्यादा एक्सेसिव डोज, कुछ ज्यादा ही ले लेते हैं डोज, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं और उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। वन थिंग दीज OTC ड्रग्स ऑल हैव इन कॉमन इज अ लेबल। इन ओवर OTC में जो सबसे कॉमन आम चीज है, इन सब में मिलती जुलती, वो क्या है, इनका लेबल है। It is essential to read the label carefully before you take any medicine. बेटा, किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले उसका लेबल गौर से पढ़ना चाहिए। It has a crucial information on it. उस पर बहुत ही जरूरी मालूमात दी गई होती हैं। All patients should consult with their doctor, pharmacists, or other healthcare provider if they have additional questions concerning OTC drug use. हाँ जी बेटा, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हम कुछ भी एक्स्ट्रा फील कर रहे हैं, तो हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उनसे डिस्कशन किए बगैर हमें ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। मोस्ट मेडिसिन शुड बी केप्ट एट रूम टेम्परेचर एंड अवे फ्रॉम सनलाइट। और हमें रखना कहाँ है इन मेडिसिन को बेटा, सूरज की रोशनी से इनको हमें दूर रखना है और इन्हें रूम के टेम्परेचर में रखना है, कमरे में अपने रखना है। Some must be refrigerator, और कुछ ऐसी हैं जिनको रेफ्रिजरेटर मींस फ्रिज में रखना जरूरी होता है। Check with your pharmacist or doctor if you are not sure. अगर आपको इसके बारे में यकीन नहीं है तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से राब्ता करें। Always make sure all medicines are stored safely and out of the reach of the children and pets. हमेशा बेटा ख्याल रखें कि आपकी जो मेडिसिन है वो बच्चों और आपके जानवरों से, घर में जो जानवर हैं उनसे दूर रखी गई हैं, उनकी पहुंच से दूर हों, क्योंकि ये वो या तो नुकसान पहुंचा सकती हैं उनको या वो इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सबक एंड टुमारो with our first lecture. Inshallah, we will meet soon. Thank you so much. Allah Hafiz.